recording. Okay, recording addressment has started. Right. Okay, all of you are presenter. Can anybody make others attendees? Let me do that so that nobody can disturb other. Okay. Okay, मैं start करने लगा proper session का आगाज. Where is the slides? Just a second. Okay, so basically this is a event named as Open Source Seekho. Like this is a day one of Open Source Seekho, where you will technically not day one, but it's a second part of day one. In this session, you will learn a lot about Microsoft Student Investor and how you can become one, and what are the resources that Microsoft offer you, and something like MLH hackathons, how you can contribute and participate in such events, and much more. So let's start it. Presenter. I'm the presenter, Abdul Rahim, Microsoft Learn Student Ambassador. And the next is Microsoft Student Ambassador. What is this? Basically, this is a program, a global program in which Microsoft selects some of the students as an ambassador, and then they train them with some kind of trainings on a monthly basis, regular basis, and then they want what they want. The actual want is that the ambassadors make a community in their campuses, grow their community under the Microsoft leadership, under the Microsoft platform, and educate the community with the latest technologies, kind of scholarships, internships, and all the latest things that is happening around the students, and students are unaware of that. So if you start the time frame, it's 2001 is the launch of MSP, and 2008 it came in Pakistan, 2018 it's relaunch, and 2019 it collaborated with HEC, and now it's rebranded as MLSA. Before it was MSP, Microsoft Student Program. Now it is Microsoft Learn Student Ambassador. So let's move forward. How to become an MLSA? Here's the link. All you just need to do is click on the link, right? So that's how it open. And if you scroll a bit like here, then you can see apply now button. All you need to do is to click on the apply now button, because I have already applied, so I don't think so it will show me. Wait a second. Yeah, my email has been so it redirect me to another page, nominate page. In your case, it will be different. Let me open it in incognito mode so that I can show you, but for that I need another account. But that's the process. You just click on the link, and after that you follow the step that they want you to fill up. Like they will need some your background knowledge, and what are your program, your education, and then your expertise. And after that they will ask some 3 questions, like how you can build a community, something that. And after that they will require interview type video, like 3-minute short video, in which you explain why you want why you want to become an MLSA, and what will you do after becoming MLSA. So all of these information must be needed for the process of this application. This application opens it is open throughout the year. You can apply at any time, but the selection is it's 2 times in a year. So I asked my friends in MLSA Pakistan community that how many ambassador Microsoft will select from one campus. So the answer is that it can be 100 or 1,000, but it depends upon the time frame. Like it's like 2 ambassador in a year. So if you are eligible for the post, if they think you have something special or unique, they will definitely select you. All you need to do is apply for this program.
So this is the application process. So all the things, all the steps that you need to follow are also mentioned in the slide. So if we move forward, then what is the benefits of MLSA? Basically, Microsoft Student Ambassador gets a lots of benefit, like all the Microsoft services, Docs, PowerPoint, some 365, all of the Office services for free, and then some software license for free, and basic the major benefit of a ambassador is a community. Ambassador gets a community which are also filled with the like-minded peoples, the ambassador from different countries, different universities. So if you need any help, you can just ask the community members. They will definitely help you. I have stuck a lot of time during my technical onboarding, so I asked help from the community. They helped me very much. So the community is a key or benefit of MLSA. Besides this, Microsoft will allow you to give the LinkedIn learning access and Microsoft vouchers, and yeah, workshops and hackathons that ambassador do. So these two things, plus I will add a thing. It also gives what is called gaming pass, Xbox 365 gaming pass for 3 months. So the criteria is that Microsoft want me to conduct a workshop in my campus, and for every 10 attendees, Microsoft will give me one voucher. So the attendees must be in the meeting throughout the 1 hour. Their demand is that I need to conduct a workshop for at least 1 hour. Na? So all attendees must be there. Minimum attendees limit is 15, maximum can exceed 2000. So if we proceed next, the shifting demand for skills in 2030. As you can see, that technical skills is only 60%. So this is a kind of resources that are given by Microsoft. So you can see technical skill is only 60%. Technical skills mean like okay, there is some error. Am I audible? Can anybody please confirm? Yeah, you are audible. Okay. I think there is some network Now issue in on your demand. side. Yeah, I found it. Is there any kind of distortion in my audio? Okay, Can now you it's please Yeah, clear. confirm? there is connectivity issue from your side. Yeah. How long it's been? Just now. Okay. It's Let okay me now. figure out. Continue. It's okay. If it occurs again, then please let me know. Okay, okay. So the third is higher cognitive skills. So as you can see clearly, the technical skill is very much reduced from 100%. There was a time when they only need your technical skills, but now it's shifting. The phase is shifting from its technical skills are reduced to 60%, and your social, emotional, and cognitive skills are very much encouraged by all of the majority of the companies. And I need to add one more thing, that the degree for such big companies like Microsoft, Google, etc., they just remove the degree limitation. They said that if you have skill, come join us. We are happy to put you on board. So as you can see, the physical and manual skills are reduced by 14%, and basic cognitive skills are also reduced by 11%. So this is a graph. So next graph is the technologies that are evolving. So here is the thing. By 25, it is estimated that 149 million new jobs will be created. Among such jobs, 98 million will be software development, 23 million will be cloud engineers, kind of cloud roles, etc. And 20 million new jobs will be data analysis, machine learning, and AI. And 6 million jobs are for cybersecurity. Similarly, 1 million jobs will be privacy and trust. It also comes with the cyber thing. So as you can see, this is a graph
which clearly shows that how many jobs will be needed by 2025. So because there is a lot of data being generated each day, that's why this skill is also being on a rapid rate, and similarly blockchain is a big majority of the companies, so that you can also consider as a rapid growing field. And as you can see, the majority of the jobs will be software development. Software development is second covers cloud engineers, all of those considered as a kind of software development engineers because they develop software, simple term. So next we have the main thing Microsoft offers for students. Let me clear one thing. Among all the major companies like Microsoft, its competitor Google and Amazon and other companies, IBM, etc., Microsoft is the only one company that is providing a tremendous amount of resources, free resources for students. Like just a simple on a lighter note, only GitHub provides $200K resources for free of cost for students. All of those resources are paid for professional peoples. They just literally paid. I have seen a lot of people. They paid for the license that we are getting for free of cost. Even I remember that like on the second or third semester, we made a WordPress website and we want to host it on internet. And for the hosting and the domain name, it almost cost $5,000, and we were like, oh, how we are going to pay this $5,000? And now all those resources are free for you. Like you will get 4 domain names, hosting services, and etc. etc. Let's start one by one and explore each. First of all, it's Microlearn. What is Microsoft Learn? Microsoft Learn is a kind of a website or a program started by Microsoft. I think my internet is very slow. Let me check. I am. Oh, I got it. Okay. Am I connected? Am I audible? I was just connected with another internet that was slow. Yes, you are okay now. Yes, okay. Okay, now I am okay. So this is Microsoft Learn. Let me show you. Okay, as you can see, browse all the paths, and if you scroll a bit down, is learn on your own schedule, become Microsoft certified, and watch recordings and events. So basically, my event will be hosted in this platform, in such kind of platform. So yeah, this meeting will be definitely hosted, inshallah. So we will click on the browse all the path. Let me click on it again. Okay, so okay, so as you can see, these are free courses, kind of courses, modules, you can say them, learning paths for free of cost. So for example, this, if you are a cloud guy and you want to build something on cloud and you want to learn cloud, this is a learning path for Microsoft Azure Fundamentals. It's a 2 or 20 minute. You will achieve this much thing: Azure administration and beginner. This is the tags that it is beginner, and this is for Azure services and administrator. Similarly, if you are a web developer, simply click on your web, and these are all the resources. Okay, let me speed up a bit because the time is going fast and we have a lot to cover. So as you can see, if you want to learn .NET, if you want to learn Python, JavaScript, just search Python, and you can filter that. If you want a beginner friendly, then you can click on beginner. And if you want a learning path or module, basically difference between learning path and module is that module is a little knowledge and learning path is a complete path, right? So Python for beginner, 3 or 42 minutes, you will click on it, you will learn a lot of things about Python. And similarly, here are another courses for Python. So let's move here. Okay, just a second. Yes, second we have certification training days. If you want to be Microsoft certified, for that you need to give an exam, Microsoft exam, right?
the examination cost is like from $100 to $300, $400. It is different for every like certification. So you can get all of those. You can kind of give those examination for free of cost. How? This is where Microsoft Virtual Training Days comes in. So suppose you are a security guy, you want to do a security examination, you will click on here. Let me clear one thing. What is a training day? Training day is a kind of training for at least 1 hour. It basically consists of 2 days, and each day you will have to attend a training of 1 hour from the Microsoft officials. After attending the training, you will get a voucher. Let me show you how this process works. First of all, I want to give a examination of Microsoft security. So I will go in, and all of these trainings are shown here. Like it is scheduled for April 13, and it is scheduled for 4. So one thing that you need to know is that all of those trainings do not have a certification voucher free of cost. Only limited trainings have a certification voucher. How you know that this specific examination has a training? I will tell you in a bit of second. So let's click on it. Security compliance, and all you need to do is register for the event. Okay, so here we go. Here you can clearly see that take the security compliance and identity fundamentals certification exam at no cost. After you attend this training, you will get a confirmation email from Microsoft, and at that email they will also send you link from where you can activate, or you can simply you can access your examination voucher, right? So next we go to free exam voucher. As an MLSA, Microsoft Student Ambassador, I can also provide you the examination vouchers, MTC vouchers. How? As I have told you earlier, that I will send this recording to Microsoft, and for every 10 student, they will send me one voucher. Either it is a LinkedIn Learning or examination voucher. So next is the Imagine Cup program. This is a Microsoft program, a very big program that is also affiliated or attached with HEC, as you can see clearly. So you will go onto this website, you will scroll down, and all the details are already mentioned here. Like you can see clearly, 1 lakh dollar, $100K are the winning prize for the team that won this kind of a competition or tournament. So team participation will be basically work on these themes: earth, lifestyle, education, health. You need to build a project for these themes, and the deadline is currently kind of off. So we have to wait for the next time frame. So if you want to register, you can click on the register. So if you want for next Imagine Cup, then if you want to go for next Imagine Cup, you can register from here. If you think you have team and you have some knowledge in projects, you can showcase. And next you can see all the details by your own. These are all the details. If I read out one by one, then it will take a lot of time. Okay, next we have Udacity scholarships. Recently, Microsoft launched 2 scholarships that are currently under Udacity. And if you click on the link here, you can see Microsoft Cloud and Data scholarships. Okay, so scroll a bit. So first is fundamental track, data analysis and visualization using Microsoft Power BI. So if you are a kind of data analysis guy and interested in data analysis, you can apply for this. And other scholarship is a practitioner track, AI engineer using Microsoft Azure. So if you are into machine learning and artificial intelligence, you are good to go for this scholarship. This is all the details are here. The Microsoft will select like 150 or 200 candidates for this scholarship. Basically, these are paid scholarship, but Microsoft is giving free of cost for students. Like I have already told you, Microsoft is the only company among the big tech companies that provide a lot.
I'm sorry for the distortion. It's bad, showing bad network quality. I don't know what happened with my network. I hope so. Okay, it's still connecting. Can anybody confirm that I'm audible and audio is clear? Yes. Okay. So next, I was telling about that this scholarship will. Sorry. Okay, nothing. So the last date to apply for this scholarship is April 18, 2022. You can apply before that date, and you will get this scholarship for free of cost. And this is Udacity scholarship. Trust me, this has a real value in the market. So next, what we have? Just a second. Okay, next we have for enforcement. This is also I'm extremely sorry for this disturbance. My internet this package was finished. Am I audible? Yes. Okay, I'm extremely sorry, guys, for the disturbance. My internet package is run out, No kind of. problem. No problem. Okay, so where we were on the okay, reinforcement learning open source fest. So this is a program offered by Microsoft, whose last date. This is the important thing. Whose last date is tomorrow, April 14. The time will be different from our local time, and the thing is that they will offer you $10,000 stipend. They will offer you $10,000 stipend for 12 week of the program. So if you go here on the apply button, so you can read the program information that what you need to do. And similarly how to submit an application. All the details about application is written here, that either you want to go for a summer session or you want to go for a fall session. You will need to upload your information and pre-screening exercise. I mean, it requires some things from you, so you need to provide them. And the timeline is also given. You can see the timeline, application period, closing timeline, and another the how the when the actual working will start. So you can explore this if you are interested. If you are a machine learning guy or something AI guy, then definitely check this one. And next we have the Pulse Microsoft. Remember when I said that in the certification training day, not all the training days have certification with it, but here you will how you can know that this particular training day has a certification. This is a real headache. To avoid such kind of headache, you will just need to go on here, Pulse Microsoft. Okay, just let it reload. So this is also another program offered by Microsoft.
Let me clear one thing. It also will tell you that you have free resources, like you can get backpacks and another resources, but this is not for Pakistanis. These are for limited countries like Netherlands and some other countries. So these resources are not for Pakistani students, but these resources you can get it. So I will tell you step by step how you can get it. First of all, for example, you want to learn about Azure. You want to get a certificate of Azure. So how you can, or you are AI guy, you want the AI certificate. You are data guy, you want data certification, Power Platform certification, and if you are a cyber guy, you will definitely want the cyber certification. How you can get this certification? So this is number 1, 2, 3, but I will rechange these numbers. First of all, you need to register for the training day. Why? Let me tell you first. If you want to go for security cyber, then first of all you need to register for training day. Why? Because the training day will be on a different day. Like if you are registering for on today, then there might be a chance that training will be on the last day of this month, right? So in between this time, what will you do? You will do this. If you have enough time, then you will do this, complete a security and cloud skill challenge. In this path, you will learn, they will provide you a learning path, kind of learning path. Okay, let me clear all the things. For a certification, you need to give an exam, right? For exam, we want a voucher, right? We get the voucher, but how we give the exam if we do not have any prior knowledge? So this is the number 1 step. You can get the knowledge about security and compliance by going here. Like if I click on it and it reloads. So start learning, you click on the start learning, it will show all the learning paths here. And just forget about these ranks. These are not for us, as I have told you earlier that these are for the backpacks, something like. So we want just certification. So just start learning. Let me click on it, start learning. So it will open up the learning path. Here we go. So you need to complete all of this learning path, because the exam will come from all of these modules, right? If like if we gave exam of Python, sorry, OOP in our campus, so we will learn about OOP first. So this is it. So if you want to get certified for security, then you need to complete these modules first. Then you will apply for the certification exam. So in the exam, they will ask questions, and all of those questions were from these modules. Okay, am I clear? So this is it. So all of you can find your required certification. So first you need to go here, training days, register for a training. Let me show you. I click on the Azure training day. So here are the timelines. First is 7 to 8 April. Second is 20 to 21 April. You can schedule your training day as per your requirement or feasibility, like if you are available on these days. So once you apply, and all you need to do is to attend 2 days of the training, 1 hour training. Like after attending, let me show you, you will receive a Gmail. Sorry, you will receive an email from Microsoft Security. Okay, I just write it wrong. Microsoft Security, here we go. So okay, you are invited. I think this is the link. Okay, no, this is an invitation. Here we go. No. Okay, so you will receive an email like okay, I'm not, there is a lot. Okay, here, after attending the virtual training, you will receive an email like this. So here you say that click here for the exam detail. Once you click here, you will it will open exam page. From there you will register, schedule your exam. Okay, so this is it from Microsoft offers for students. Next we go to GitHub Programmers Heavens. So I have told you earlier that GitHub is only organization that is this is basically Microsoft
organization. This came under Microsoft. Microsoft owned it. So it has two gifts: pre-gifts and post-gift. Gifts are student developer pack. I've already told you how to access these developer pack in the previous session, which held yesterday. So these are the developer pack resources like Namecheap, domain name, and JetBrains license, name.com domain name, and all of these resources for free you can get from GitHub as a student. Second is a post gift. Gift is that you will get recognition and experience. You can go to GitHub. You will open up various repositories like here. If I just give you a little brief about it, if so, here is a Borda. So this dude has a lot of resources. Oh, okay, my light. My internet is still here. Am I audible? Okay. You are fine. Okay. Okay, so you can find these repositories, and you can contribute to such repositories. You will get recognitions, and even most of the repositories, most of the owners will also give you some swags for your contribution. So definitely you will get recognition, experience, and swags. So these are the boring stuff that has done. Now not the boring stuff, but important stuff. So next is the MLH. What is MLH? MLH is an organization that hosts hackathons. So let me tell you what is hackathon and how you can enroll in a hackathon. Okay, let me clear all of these things. Oh no. Okay, so first you need to go to MLH, or you can simply click on here. This is the website that I have already provided you. So here we go. You have all the list of hackathons for 2022. Okay, so hackathon is kind of if you do not know already, that hackathon is a kind of an event, competitive event, where you will. It is a basically 3-day event where you will go. You will learn something. First 2 days are focused on learning. They will teach you some new skills, and the third day will be the hackers day. Like in the third day, you will make up a project and provide to the team of the particular hackathon. So after evaluating your project, they will tell that you are winner or not. So the winner got prizes. If you want to register for this, but no, we cannot, because it is already happening April 3rd. No, we can. It's April 3rd to 10th. But on a bit safer side, just go here, Bitcamp. Just click on Bitcamp. This is all of these are hackathons from different organizations, for different universities. You can enroll any of these have a different timeline. Like it has a timeline of April 8 to 10. It has a timeline of like 9 to 10, and similarly different timelines. So it will keep updating. So this is the May 21st hackathon. So if we proceed to the end of this month, there will be more hackathons in this list. So we click on Bitcamp. So just go in here. So here we go, application link. So all you need to do is click on apply now. It will open up a registration form, kind of a registration form like this. You will need to fill this. Remember one thing: fill it with your university email and organization. If it asks your organization, that just write the university name, or if it asks for school name, that write university email. Okay, so after that it is asking that choose a track. You are a beginner, hardware track, quantum track, or general. We are basically beginners, so we will go here, beginner. And another details want to give up us a shipping address. Why this shipping address? Because if you win some prizes, or even if you participate, most of the companies and most of the hackathons just give you prizes by your participation, right? So even if you do not win anything, they will most of the companies will ship you something, at least like a stickers or digital swags. So that's why they're asking the address. You need to provide the actual and proper address, like the zip code of your area, country, and state, etc., etc. So one more thing that I need to add: some of these hackathons do not provide swags for outside the USA. Like it has a very little chance.
Like I have already participated like 7 to 8 hackathons, and none of the organization says that we cannot ship to Pakistan. Okay, as I was telling you, here we go. Please note that we can only ship to USA. So this organization is not going to ship to Pakistan. So if you still want to get experience, you can apply for it, but for the swag thing they are saying sorry. So this is kind of application form. After filling, they will send you an email for the confirmation, and the email they will also provide you the Discord link, because majority of the communications occurs on the Discord. For hackathons, Discord is a good tool. So that's why I use the Discord approach. Okay, there are another hackathons you can apply like for your taste. If I click on it, cat hacks. So it has also sign up page. First you need to sign up and apply, and click on prizes. These are the kind of hackathons from the organizations and universities. So let me give you another website. This is DevPost. This have a lot of filter checks. A filter check means, here we go. If you want to search a hackathon on the basis of the prize money, you can search on the basis of prize money. If you want to search a hackathon on the basis of a web technology, like if you're a web3 guy, you can go here. As you can see, 76,000 in prizes, 29 days to deadline, right? So just scroll down. So it will tell you what you need to do, the duration. It will show you all the detail about it, and just scroll a bit, and here we go. It requirement, what they want from you. Okay, so all of these requirement, and here is the prizes list. Like if you are the winner, then you will get this much prizes. If you are this category person, relay category, marathon category, and all of these are category, art attack, then you will get some different prizes. So when you like submit your hackathon, then they will ask you the which category you want this hackathon, this project. So you can apply for multiple categories, and you can win multiple prizes. So these are the judges list and judging criteria, all the details. So first of all, you need to make a website on DevPost. This is also website for hackathon, but these are like if you say fancy hackathons or more expensive hackathons, all of those hackathons are posted here. And you can even search like web, just click on web or something. Here we go, web3 something, go hack, 20,000, 3,000 different prices. Like you can see 400k prizes. I have seen hackathons that were like $3 to $5 million in prizes on one particular hackathon. So you need to go, just apply, just send the project. They will not say that this project is bad, this project is worse. They will not say, they will not discourage you. But the thing I'm trying to say that if you submit a project, if you do a work, then you will get a boost. You will kind of feel more mature, more experienced, and this much experience came from the hackathons. So this is from hackathons. Next we have MLH fellowship program. This is a internship program. Let me fast up my speed. Okay, this is a fellowship program. Okay, this is a 12-week fellowship program. All you need to do is click on the link and go for it. Apply now. It picks students on the two bases, like a Microsoft Student Ambassador. Similarly, it picks students 2 times in a year. You can apply. So it will tell you that you are selected or rejected. Even if you are rejected, they will tell you you are rejected on the following reasons. So the application will take at least 30 to 40 minutes. Like I will show you something. So first of all, they will check eligibility criteria. You are eligible. I have already read this, the commitment, etc., etc. So next page is the information: first name, primary email, resume. These are the things that they want from you. So make sure you have these things. Next page, if you go, so this process continues. This is kind of a 1 hour process, so you can fill it.
one thing that I want to add, that at the end of this application, they will require a project. They want you to show a project, even a lighter project, not a big project. Just show them, put the project on the GitHub. I have told you in the previous session, which was yesterday, that how to put your projects on the GitHub. So just put your project on GitHub and provide them the GitHub link. They will check your project, and after checking the project on and all the details you provided to them, they will select you for the fellowship program or not. So once you got selected, they will assign a team to you, and they will give you a module or project whom you and the team will work. So the module will be Microsoft, Meta, Amazon's, and even GitHub modules. So indirectly, you are also working for such big companies. So this is end for the Microsoft and MLHA thing. But this is not the end of this session. We have more things. Let me check. Okay, we have more things. So this is end for the MLHA and the Microsoft thing. So next, I'm just moving fast forward. This is Grow with Google. You can find these resources at this website. I'm not opening it, just go and check it. So next is Google Summer of Code. This is the main thing that I need to discuss, and I have already took a lot of your time. So let me click on it. Google Summer of Code, how to find an organization. The most important part is that how to find an organization and how to apply for the organization, right? So next, as you can see clearly, the application is still closed because it is not open yet. It will open on the April 4, and it will last long till 19th of the April. So if you click, you will see nothing. So just scroll a little bit, and okay, where is the organization tab? Okay, view program page, click on it, view program page, and here you can see GSOC 2022 organization announced, and the list are here. Browser R 2022 organization. Just click on these, and here we go. These are all the like tags. If you want to work for data, you can click on data. If you want to work security, you can click. If you are a web guy, you can click on it. I'm just click on all, and all of these organizations will be shown to you. But suppose you have an expertise in a particular language like Python, Java, C++. So I just entered like Python and hit enter. Okay, do not hit enter. It will show you all the organization that require your language Python, that want your expertise in Python. So Django, Plone, and SigMath, and a lot of these organizations like Metasploit. It is a kind of security organization. So all of these things require Python skills. Just click on LibreCube. Just click on it. Okay, so here it clearly shows that these technologies are required for the working on the projects. Most of these skills are kind of heavy skills. So, and I do not have knowledge. I just neglect this organization, and we will find something that is more simple and according to us. Okay, this is kind of good. Like Python, I know Python, I know C++, I know PyTorch. Okay, I can see, first of all, you need to see contribution guidance. They has a guidance for the contribution. They want a particular thing from you, that what you what you need to do, from where you can start. All of these things are written here. You can just read them. And next is view ideas list. So click on it. Here we go. You have ideas for 2022 Google Summer of Code for this particular organization, that is Robocom. So the first idea is improvement on the social navigation toolkit Sonata. So the description is there. Just read the description and check if you know all of this thing and you can do things. And also they clearly mentioned that these are the required skills: Python, C++, VBoats, and RoboCamp.
and this project will be 174 hour long, and the difficulty is medium. And the mentor that is been assigned to you will be these two mentors. They will guide you throughout the project. So if you just stuck at some point, you can contact them and they will guide you. Similarly, the next project and this one is good. This one requires only 2 skills like C++ and Python. And if you are a Python guy then and Comsian, then you already have C++ knowledge. And the difficulty is also medium. You can check this project module mentor detail, and you can find the project on the organization GitHub or the repository from where they have uploaded. So all the detail about the repository will be here, or GitHub projects. If you click on here, you will see the projects, and from there you can contribute. And similarly, you can scroll all of the organization. If you want to go for web and you have a Java or JavaScript language expertise in JavaScript, just search it, and these are the organizations that are falling under your requirements. So first is Electron. Let's go Electron, JavaScript, Node.js, C++, TypeScript, Chromium. So if you are JavaScript guy, and I am supposing that all of these skills will be you knew all of these skills already. So you can similarly contribution guidelines you will see, and you can see the projects. So suppose you find a project finally. You can say that you are good to go for this project. You can do the work that are required from the project. So what is the application procedure, how you get that project, how you are assigned to that project? So suppose this project is simple. It requires only 2 things: TypeScript and JavaScript. So you will just go here, issue tracker, and check the issue. What is the issue for this project? What they want you to solve? And then after that, you go back here on the main page. Let me remove this thing. Just go here. Remember the name of the organization and the module that you are want to contribute. Like the organization is Electron and the module is this GitHub issue automation. Just go here on the main page of Google Summer of Code. When the links open, then just click on it. Application process will open up, and you just need to fill up the application process. And at that application process, you will tell the detail that okay, I want to work for this particular organization. I have already experience in open source and JavaScript. I know the problem. I can provide this solution, and this is the solution as per my knowledge. I can do this thing. And the one more important thing, you will tell them that which time frame you are not available. Like if your exams, you can clearly mention that these are the dates that I will not be available, right? So after that you will submit the application. Okay, अभी मैं उर्दू में भी बोल सकता हूँ. तो नेक्स्ट इसके बाद आता है गूगल समर ऑफ कोड. तो गूगल समर ऑफ कोड भी सिमिलरली दिस इज गूगल सीजन ऑफ कोड. ये गूगल समर ऑफ कोड की तरह ही है, बट इसमें फ़र्क ये है कि आपने इसके अंदर कोड नहीं लिखना. ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कोड ऑलरेडी बने हुए हैं. आपने बस जाके डॉक्यूमेंटेशन लिख देनी है कि ये कोड कर क्या रहा है, इसका क्या वर्किंग है. इस वेबसाइट को आप खोल के खुद ही चेक कर लीजिएगा. तो नेक्स्ट है गूगल क्लाउड. गूगल क्लाउड ना बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्लाउड के अंदर ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन के एक अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रैब कर सकें. सिमिलरली गूगल क्लाउड ने भी अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं बच्चों के लिए. अगर आप देख सकते हो तो ये सारे वो लर्निंग पाथ्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से हासिल कर सकते हो. और जब आप ये हासिल करो, वो आपको एक बैच भी देंगे ये, ठीक है. वो बैच आप अपनी CV के ऊपर शोकेस कर सकते हो. वो बैच का मतलब ये होगा कि इस बंदे को इस फील्ड के अंदर बड़ी अच्छी नॉलेज है. लाइक अगर मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो, मशीन लर्निंग के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारा मशीन लर्निंग का कंटेंट बता देगा. लाइक लैब है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो गूगल क्लाउड की सर्विसेज लैब के ऊपर. आप ये कोर्स आपको बताएंगे, इसमें सारी डिटेल नॉलेज आपको देंगे. सिमिलरली एक अनदर कोर्स है, और कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ये गूगल की वेबसाइट पे ही हैं. लेकिन अगर ये कोर्सेरा पे जाते हैं तो तब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हो.
तो ये जब आप एंड वाला कोर्स कंप्लीट कर दोगे ना, क्वेस्ट है बेसिकली, इसके अंदर आपसे लाइक लैब भी होती है और नॉलेज शेयर भी होता है। तो जब ये आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको बैज मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गूगल की तरफ से। तो अगर आपने इसको अटेंड करना है तो जस्ट क्लिक ऑन ज्वाइन टू सब्सक्राइब, और उसके बाद अपना जीमेल अकाउंट देना है, साइन इन विद जीमेल करना है, और ये आपको सारी रिसोर्सेज एक किस्म का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो हमें ये इसके हैं आपको जो मिलेंगी फ्री लर्निंग पाथ्स, लैब्स फ्री मिलेंगी, क्वेस्ट और स्किल बैच। नेक्स्ट वी हैव क्विक लैब। तो ये वो है जो मुफ्त वाला सा, बस इनके ना आते हैं इवेंट्स हर क्वार्टर वाइज ही आते हैं गैसो। तो हर क्वार्टर में ना, हर साल के मतलब तीसरे हिस्से के अंदर, तो ये आपको एक इवेंट देते हैं। रिसेंटली इनका हुआ है लर्न टू कोड। अब मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। लर्न टू अर्न। तो ये है इनकी जीमेल पे मुझे ईमेल आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज और क्या क्या काम करना होता है। जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है ज्वाइन नाउ, फिर ये उस वेबसाइट पे ले जाएगा आई गेस सो, लेके जाना चाहिए। हाँ ये रहा। ओके, सो ये सारे स्वैग्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हो, जस्ट लैब्स को परफॉर्म करना है आपने, राइट। अब ये देखो, ये हुडी और ये वाटर बोटल्स और ये पर्स और टी शर्ट टाइप चीज़ें इस तरह की आप सारे हासिल कर सकते हो। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 भी होता है इनका। लेवल 1 में क्या होता है, लैब्स होती हैं। लैब्स किस तरह होती हैं, वो सारा कुछ ना आपको पहले बता देते हैं कि आपने स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है। तो स्टेप 10, 20 इतने होते हैं कुछ लैब्स के, कुछ में कम होते हैं। तो आपने जिस वो परफॉर्म करने हैं तो आपकी वो एक लैब कंप्लीट हो जाएगी। और हर लेवल में थोड़ी लैब्स होती हैं, लाइक 5 से 6। तो हर लेवल को जैसे ही आप कंप्लीट लैब्स उनकी कंप्लीट करोगे तो वो लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हर लेवल के अगेंस्ट आपको ये रिसोर्सेज और चीज़ें मिलेंगी। लाइक अगर आपने सिर्फ एक लेवल कंप्लीट किया तो आपको ये क्लाउड स्किल बूस्ट क्रेडिट मिलेगा 25 फ्री। और अगर आपने 2 लेवल कंप्लीट किए हैं तो आप ये वाटर बॉटल या पर्स में से कोई चीज़ हासिल कर सकते हो। और सिमिलरली अगर तीनों कंप्लीट किए हैं तो ये हुडी या फिर ये एक और वाटर बॉटल है, इसमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। और रिसेंटली इनका एक और आया था, वो एक उसके अंदर बैच 4 था। वो बैच 4 जो कंप्लीट करता था ना तो उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती थी काइंड ऑफ। तो ये इसका सवाब है क्विक लैब का। और ये मैं बता दूं, ये ना इतने सेकंड्स के अंदर इसकी 10,000 सीट्स होती हैं और विद इन मिनट्स मेरे सामने फिल होती हैं वो। क्योंकि ये इंडिया के अंदर भी बहुत चलता है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ें हासिल की हैं। तो आप लोग भी इसके ऊपर ज़रूर ट्राई करना। तो इतना कुछ खास मुश्किल काम नहीं है, लैब्स आपके सामने सब कुछ पहले बताया हुआ है, आपने बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। और स्टेप्स फॉलो करने के बदले आपको ये सारा चीज़ें मिल रही हैं। आपको लर्निंग भी हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको और स्वैग्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव गूगल डेवलपर एक्सपर्ट। अगर आप किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो तो यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद आपको वो एक टैग मिलेगा और उस टैग से आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। इसके पर्क्स हैं रिकॉग्नाइजेशन, कोलैबोरेशन और गुड सैलरी। तो नेक्स्ट वी हैव AWS वेब सर्विसेज। सिमिलरली जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट लर्न और गूगल लर्न है, AWS का स्किल बिल्डर प्रोग्राम है। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो ये तमाम स्किल्स आपको दिखाएगा। लाइक अभी मैं रिसेंटली इसके अंदर था फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, नहीं ये मेरी नहीं है, मतलब ये ऑल द पाथ्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। मशीन लर्निंग सीखनी है, IoT सीखनी है, नेटवर्किंग सीखनी है, एग्जाम रीडनेस, कोड भी प्रोग्राम है, डिजिटल ट्रेनिंग है ये बेसिकली। और लर्निंग प्लान्स में यहाँ पर जाना है अपने ऊपर। तो सिमिलरली स्टोरेज लर्निंग प्लान सीखना है, सिस्टम ऑपरेटर, गेम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी प्लान सीखना है। तो इनमें से किसी पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकोगे इसे। और इसके अगेंस्ट आपको वाउचर्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग है, इसी तरह AWS की भी ट्रेनिंग है। तो मैंने रिसेंटली इनकी ली थी ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर, आपको आके एक नॉलेज देते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड का। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आप बेसिकली भी अप्लाई कर दो तो वहाँ उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगा, तो बाद में आप ट्रेनिंग को एक्सेस कर सकते हो। 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, ये लिखा हुआ है नीचे, बल्कि ये 1.5 घंटे की है और ये 6 घंटे की है, ये 2.5 घंटे की है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम है इनकी ट्रेनिंग के। सो नेक्स्ट AWS इनोवेट है, ये भी इनका एक इवेंट था जो भी गुजर गया है, लेकिन आप इसकी वीडियोस जो भी थी वो सारी हासिल कर सकते हो। ये इवेंट बेसिकली AI और मशीन लर्निंग के लिए था। आप
थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो आप देखोगे ये सारे पाथ से जो AWS के जो टॉप के डेवलपर्स हैं उन्होंने कंप्लीट किए थे, उन्होंने मतलब इन चीज़ों के ऊपर नॉलेज दिया था कि क्या क्या होता है मशीन लर्निंग के अंदर, AI के अंदर, और ये सारा प्री रिकॉर्डेड भी है। अगर आप हासिल करना चाहो तो यहाँ पर कहीं पर एक लिंक है, जस्ट सेकंड, बिल्डर जोन के ऑन डिमांड, ओके, वॉच ऑन डिमांड। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आप ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ये सारा नॉलेज मशीन लर्निंग के बारे में, AI के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इनके टॉप लीड के बंदे हैं जिन्होंने ये सारी नॉलेज आपसे शेयर की है और इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट ये है मशीन लर्निंग स्कॉलरशिप। तो अगर आप में से कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है तो यू आर गुड टू गो। आपने सबसे पहले डी प्लेसर पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। अभी मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर इस तरह का पेज शो होगा, हाय अब्दुल। इन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने जाना है, कहाँ पर जाना है, ओके, गो फॉर योर प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाओगे ना तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे नीचे AWS AI स्कॉलरशिप्स, इसको पढ़ लेना। ये क्या क्या कह रहा है कि क्या क्या फेजेस हैं, किस तरह आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अभी मैं ऑप्ट हूँ स्कॉलरशिप के लिए, तो बेसिकली मैंने 11 तारीख को एग्ज़ाम देना है इनका, तो उस एग्ज़ाम के लिए मुझे 80% नॉलेज होना चाहिए, तो अभी 0% है क्योंकि बिजी ना हूँ तो कुछ भी नहीं किया। तो जस्ट लर्निंग मॉड्यूल के ऊपर पहले आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई का बटन होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना लर्निंग मॉड्यूल्स के ऊपर, तो यहाँ पर सी ऑल चैप्टर्स देखने हैं। तो ये सारे लर्निंग मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट करने हैं और इनके शॉर्ट क्विज होंगे। तो अगर आपकी कारकर्दगी 80% होगी तो फिर आपको नेक्स्ट स्कॉलरशिप देंगे जो होगी पाइथन की, और भी इसके अंदर होगा। तो वो यूडेसिटी की स्कॉलरशिप होगी, तो मतलब वो मशीन लर्निंग का प्री रैक है किस्म का। तो जब आप पाइथन कंप्लीट कर लोगे तो और अच्छे पोजीशन नंबरों से कंप्लीट की तो आपको नेक्स्ट स्कॉलरशिप में अपग्रेड कर देंगे। वो है मशीन लर्निंग की प्रॉपर स्कॉलरशिप, और वो स्कॉलरशिप बहुत मज़ेदार है। तो ये था मशीन लर्निंग का। और नेक्स्ट है CNCF, क्लाउड नेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटेशन फाउंडेशन। तो ये अगर आप ओपन सोर्स की बात करते हो ना तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स की है। ये आपको बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लाइक आपको कुबरनेटिस के बारे में जानना है, आपको एनवॉय के बारे में जानना है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है, तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री। और सिमिलरली आप यहाँ पर जाओ, अगर आपने इनकी कंट्रीब्यूशन करनी है तो लिनक्स फाउंडेशन के ऊपर जाओ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, मेंटी बनना है, राइट। सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद इस बटन पे क्लिक करना है, बिकम अ मेंटी। ये एक एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो इसको आपने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। वंस यू बिकेम अ मेंटी देन दीज आर द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम टू होम यू कैन अप्लाई। ओके, तो ये सारे देखो, ये भी इनकी एप्लीकेशन खुली हुई है, इनकी डेडलाइंस भी लिखी हुई है। लाइक आप देख सकते हो, कोई भी आपकी, अगर आपकी ये देखो किसी की जावा की स्किल है, गो की स्किल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इनके प्रोजेक्ट स्टैटिक्स भी हैं। अभी फंडिंग फिलहाल 0 है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेड करती रहती हैं वंस द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। सिमिलरली ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन और भी लोड होती रहेंगी यहाँ पर ना, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखो, ये जो थी CNCF की ये एप्लीकेशन क्लोज हो गई है, और इसी तरह मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। तो यहाँ पर अप्लाई करना ज़रूर। यहाँ पर ये सारी लिस्ट लिखी हुई है कि मोस्ट पॉपुलर मेंटर्स कौन है और प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। और ये क्लाउड नेटिव कंप्यूटेशन फाउंडेशन, ये देखो, ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टर CNCF सबसे बड़ी सपोर्टर है, क्योंकि मैंने बताया ना ये बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर क्लाउड आप ओपन सोर्स की बात करते हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट वी हैव क्यूबकॉन क्लाउड नेटिव कॉन यूरोप। तो ये बेसिकली क्लाउड नेटिव का एक इवेंट है। आप इसके लिए एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर क्या आपको फ़ायदा है, जस्ट हियर, इज इट यूरोप, ओके, ये यूरोप है। 16 से 20 मई तक का है। आप इसको फिजिकली भी अटेंड कर सकते हो, वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हो। फिजिकल के लिए एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है, तो अभी अप्लाई करो तो थोड़ा महंगा ज़्यादा बन जाएगा। वर्चुअली एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, राइट। तो स्कॉलरशिप्स के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ ये क्या है। ये एक प्रोग्राम है जो 16 से 20 मई तक रहेगा और इसके अंदर आप क्लाउड नेटिव के बारे में जान पाओगे, डेवऑप्स के बारे में जान पाओगे। लाइक अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम पे जाओगे ना, स्केड्यूल पे जाओगे, तो यहाँ पर अभी स्केड्यूल, एक मिनट लोड होने दो। ओके हियर वी गो। सो ये देखो, आपको ये सारा बताएंगे कि हमने क्या क्या करवाना है। मंडे को ये कुछ होगा, ठीक है। क्लाउड नेटिव के बारे में आपको बताएंगे, क्यूबरनेटिस के बारे में बताएंगे, क्यूबरनेटिस एआई डे के बारे में बताएंगे। सिमिलरली डे 2, डे 3, डे 4 आपको की नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर सेशंस होंगे आपके लिए, और फ्री स्वैग्स भी आप जीत सकते हो। यहाँ पर टॉप के जो बंदे हैं ना क्यूबरनेटिस क्लाउड्स के, क्लाउड नेटिव के, वो आपको नॉलेज देंगे। बेसिकली होगा ये फिजिकली, लेकिन एज अ वर्चुअल आप रिकॉर्डिंग इसकी देख सकोगे, लाइव रिकॉर्डिंग एक किस्म की। तो अगर इसके लिए अटेंड करना है तो स्कॉलरशिप पे जाना है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ फ्री स्वैग्स मिलेंगे। लाइक लिटरली यहाँ पे स्वैग्स का प्राइसेस का एक अलग टैब है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्वैग्स हासिल कर सकते हो। यहाँ पर जाओ अप्लाई नाउ पे, ये देखो ये डिटेल लिखी हुई है। इन पर्सन के लिए अप्लाई डेट गुजर गई है, तो वर्चुअल की 24 अप्रैल तक का है। अगर आपने स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस सर्वे, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, तो आपका डिफरेंट होगा। तो वो उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो ज़रूर इस पे अप्लाई करना। रिजेक्ट हो गए हाथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुए भी, अगर सिलेक्ट हुए तो भले भले आपको नॉलेज भी मिलेगा और फ्री स्पैक्स भी मिलेगा। अगर क्यूबरनेटिस के बारे में, एआई के बारे में, क्लाउड नेटिव के बारे में नहीं भी इंटरेस्ट है तो ज़रूर अटेंड करना, एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि ये अच्छा ये थोड़ी सी हट के टेक्नोलॉजी है, मुझे इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। कल बंदा वैसे ही लिख देता है सीवी पे, हाँ मुझे क्यूबरनेटिस आती है, मैंने सेशन अटेंड किए थे, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिला है। 4 से 5 दिन वैसे भी ज़ाया करते रहते हैं, तो चलो इसके अंदर लर्निंग के अंदर ही गुजर जाएंगे। तो ये देखो स्टूडेंट्स भी जाते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन अच्छी वाली कर रहे हो, अगर यहाँ पर काम वगैरह कर रहे हो, तो ये आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये, इसका आपको लर्निंग होगी, क्यों अटेंड करना चाहिए, क्यों, कौन क्लाउड नेटिव, कौन यूरोप। आप लर्निंग हासिल कर सकोगे, फ्री स्वैग्स मिलेंगे और कम्युनिकेशन भी होगी। कम्युनिकेशन आपके दूसरे टॉप रैंक के लोगों से। तो नेक्स्ट वी हैव EDX, दिस इज लास्ट। ओके हाँ यस दिस इज लास्ट। EDX क्या है यार, अगर ना आपने प्रीमियम कोर्सेज करने हैं, लिटरली हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी तक के कोर्सेज करने हैं ना, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। लाइक आप प्रोग्राम पे जाओगे ना, तो बैचलर डिग्री के प्रोग्राम भी हैं। और एक सेकंड में जिस आपको दिखा रहा हूँ, स्कूल्स एंड पार्टनर, जस्ट गो टू स्कूल एंड पार्टनर्स, हियर वी गो। आप देखो सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्री कोर्सेज यहाँ पर पड़े हुए हैं। लाइक अगर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दीज आर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री, सम ऑफ द कोर्सेज में बी पेड। लाइक अगर आपने पाइथन के बारे में सीखना है, ठीक है, अगर आपने एआई के बारे में सीखना है, जस्ट गो ऑन हियर, इस पे क्लिक करो। ओके दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन इनरोल हियर, और वंस यू इनरोल्ड यू कैन हैव एक्सेस फॉर दिस कोर्स। तो ये बड़ी प्रीमियम और अच्छी वेबसाइट है। तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली, मतलब जो हम कोर्सेज बार भाग भाग के लोगों से मांगते हैं, पेड करते हैं, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और वो भी होंगे टॉप किस्म के लोगों के ना, हार्वर्ड के टीचर्स के। यार हार्वर्ड के टीचर्स की कदर है, उनका नॉलेज बहुत वसी है, बहुत अच्छा नॉलेज है उनका। तो ऐसे लोगों से कोर्सेज करोगे तो आपका नॉलेज भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो लाइक अगर आपका डाटा एनालिसिस, सॉरी DSA का कोर्स है, या DAA का डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम आपकी यूनिवर्सिटी में, और आपको लग रहा है कि आपके टीचर थोड़ा स्लो पेस पढ़ा रहे हैं और आप थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप उसी दौरान, उसी पीरियड के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि ना अपने कोर्स कंटेंट पे ना रोके, अच्छा चौथे सेमेस्टर में DAA पढ़ूंगा, उस टाइम आएगी तो उसी टाइम पढ़ूंगा, नहीं, आप दूसरे से स्टार्ट कर सकते हो। जितनी जल्दी ये चीज़ें सीखना स्टार्ट करोगे ना, आपको उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप चौथे पाँचवें तक ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके होगे। तो वहाँ से आप अपनी नॉलेज को वसी कर सकते हो, और छठे सातवें तक आप ऑलरेडी जॉब भी हासिल कर सकते हो। तो लर्न, और डेफिनेटली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लर्निंग स्टार्ट करो टेक्निकल स्किल्स की।
और लास्ट है कि कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है, इसकी वजह ये है कि आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं कम्युनिटी के अंदर, लाइक जितनी भी नॉलेज है अभी मेजॉरिटी ऑफ द थिंग जो आपको बताई है, आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो, ठीक है। CSS और मेरी एक एज अ एम्बेसडर एक कम्युनिटी है फारूकी, अब तो आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो, इसी वजह से आपको इस इवेंट की डिटेल के बारे में पता था। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं कि क्या हो रहा है सराउंडिंग के अंदर। लाइक मैं मेरी कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन किया तो मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूँगा कि अच्छा ये माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट आ रहा है, इसमें आप अप्लाई करो, क्योंकि मुझे पीछे माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी से जो एज एम्बेसडर कम्युनिटी है वहाँ से अपडेट्स मिलती हैं, तो वो अपडेट्स मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट है रिसोर्सेज है, कनेक्शंस आपको कम्युनिटी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर देती है, नॉलेज प्रोवाइड कर देती है, आप कनेक्शन बना सकते हो। लाइक कम्युनिटी भी बनी हुई है डिस्कॉर्ड की, तो वहाँ पर आप एक दूसरे को अपना लिंक्डइन शेयर करो, आप आपस में कनेक्ट हो, और सिमिलरली एक दूसरे को फॉलो कर लो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, आपस में एक दूसरे को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और कम्युनिकेशन है। तो फेमस प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड है, स्लैक और टीम है। डिस्कॉर्ड और स्लैक मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। डिस्कॉर्ड थोड़ा ग्राउंड लेवल पे, हम जैसे स्टूडेंट्स के लेवल पे, स्लैक थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और टीम्स भी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज़ होती है। सो this is it. Special thank to all the attendees, all of you guys, my friends who just supported me throughout this event, जिन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, तो उन सब का एक बिग बिग स्पेशल थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोगों की वजह से ही मैं सब कुछ कर पाया हूँ, विदाउट यू आई विल बी लिटरली मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बगैर। तो थैंक यू सो मच गाइज, और ये आज के सेशन का एंड है। तो अभी क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, तो नहीं है First तो of all, really great session. ओके। थैंक यू Thank you सो so मच। much for your efforts. Yeah, thank you so much for your efforts too, brother. You are Okay, there for so me. when will be our next session? I'm trying to conduct a session by the end of this month uh, about Azure Services Cloud Platforms. So yeah, by the end of this month, inshallah ta'ala. Will that be online as well, or that Yeah, will be physical? before I am instructed to do the session online till June, because Microsoft is currently now in lockdown mode, so they advise all the ambassadors to conduct the session in the online platform like Teams. So that's why I'm kind of restricted, and I really do not like this because the students get bored, and पर्सनली बताऊं तो स्टूडेंट ने एक अटेंशन, हम इस फेज से गुजर चुके हैं। टीचर्स हमें पढ़ाते थे, हम नहीं इतने अटेंटिव होकर बैठ सकते। अब बंदा मेंटली भी अपना बना के है ना माइंडसेट कि मैंने अटेंटिव बैठना है, फिर भी नहीं अटेंटिव बैठ सकता। तो Okay. दैट्स One last ऑल। thing. या How was your experience with WordPress at second semester? माय एक्सपीरियंस वर्डप्रेस, बेसिकली मैंने एक बहुत ही काबिल और होनहार और अच्छे दोस्त के साथ कोलैबोरेशन की थी। हम दोनों ने एक प्लान बनाया था कि पैसा छापना है, ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर बहुत पैसा कमाना है, सॉरी। तो हमने वर्डप्रेस शुरू की थी तो हमने वर्डप्रेस वेबसाइट बना भी ली, बहुत अच्छी वेबसाइट थी, बस लाइव भी की थी, बस शोकेस नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह वो उसके सारे पड़े हुए हैं, जो रॉ डाटा है ना उसका पड़ा, तो इंशाल्लाह उसको ना हम होस्ट करेंगे, एजूर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो दोबारा नए सिरे से पैसे कमाएंगे। तो या वो इतना खास एक्सपीरियंस नहीं गया, क्योंकि वर्डप्रेस काइंड ऑफ आपको लिमिटेड कर देती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो वर्डप्रेस लिमिटेड चीज़ों के लिए अच्छी है, लाइक अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हो, वेबसाइट वर्डप्रेस बेस्ट चॉइस है। लाइक सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और आपको सारा वो फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गया था मेरा वर्डप्रेस का, और मेरे दोस्त का भी बड़ा अच्छा गया एक्सपीरियंस। बस उसके कॉल आई थी, लंदन से कॉल आई थी, जिससे इमरान खान को आई थी, उसको भी कॉल आई थी, वो बेचारा फिर पीछे हट गया, जिससे हमारे बाजवा साहब। ओके, नो पॉलिटिक्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है। सॉरी, 2 लोग म्यूट हैं, तो इनको भी अनम्यूट कर देते हैं। अगर मैसेजेस में पूछना है, मैसेजेस में पूछ सकते हैं, बाकी मैं मीटिंग की डिटेल आपको इसका रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड में सेंड कर दूंगा। तो thank you so much guys for joining and supporting me.
Allah Hafiz. Good night, everyone.